Then we discussed in detail these primary, secondary, and EOR methods. So today we will discuss about the EOR process. So in sense of EOR processes, it says that EOR processes involves the injection of fluids or fluids of some type into a reservoir. The injected fluids and injection process supplements the natural energy present in the reservoir to displace oil to a producing well. Basically, energy is present in the reservoir. What you are doing for initially at a primary stage, it's just using its own driving force. Then in secondary, you are giving it a push by water flooding. And then in tertiary, either you are using a single fluid or multiple fluids in order to support this energy system, which is present in the reservoir in order to produce more hydrocarbons. So it says in addition, the injected fluids interacts with the reservoir rock. Excuse me, sir. और जी बेटा सर कोई बार बार रिमूव कर रहा है मीटिंग पे. आपको रिमूव कर रहा है? कौन रिमूव कर रहा है? पता नहीं सर. किसी के साथ दुश्मनी की है क्या आपने? सर दूसरा बंदा बोल रहा है. भाई अब सुबह की क्लास मैंने नहीं रखी है टाइम टेबल में, तो काइंडली मुझसे दुश्मनी ना करें. तो लेट मी joins. How is it possible कि कोई और आपको कैसे रिमूव कर सकता है? ऐसा पहले भी हुआ है कि आपके साथ कि कोई आपको रिमूव कर रहा हो? सर ये हर क्लास में होता है सर, जब अटेंड ही नहीं होते हैं तो रिमूव होते रहता है. नहीं होते रहते हैं तो उनको खुद होते हैं या कोई करता है? कोई करता है सर, कोई ना कोई करता है. मैं इसमें ऑप्शन देख लूं, कोई ऐसा अगर ऑप्शन हो जिसमें आपको कोई रिमूव ना कर सके. चलिए पार्टिसिपेंट्स अच्छे खासे हैं, तो we will move towards the slide now. So in your processes, it says that in addition, the injected fluids interacts with the reservoir rock or oil system to create conditions favorable for oil recovery. अब यहाँ पे it says that जब हम कोई भी fluid inject कर रहे हैं reservoir में, तो उसका first interaction reservoir rock और फिर oil system से होता है, और फिर वो favorable एक conditions वहाँ पे develop करता है. So what does it mean about developing a favorable conditions into the reservoir at initial level? जब प्राइमरी रिकवरी से आपने प्रोडक्शन ले ली है और जब आप पानी उसमें इंजेक्ट कर रहे हो, तो जो रॉक के पोर्स होते हैं एट पोर लेवल, वो ऑयल या तो उन पोर्स में स्टक हुआ होता है,
उसको बाईपास होने के लिए स्पेस नहीं मिल रही होती है, या फिर वो जो पोर की वॉल्स वॉल्स होती हैं वहां पे वो स्टिक्ड होता है, मतलब इट्स अटैच्ड विद द पोर वॉल्स इन द पोर रिजर्वायर ना. सो what this fluid which you are introducing into the reservoir, what's its function? Basically it interacts first with the rock, और अगर रॉक के साथ इंटरेक्ट करेगा तो either it will replace the oil which was already interacting with the rock, or it will just try to remove it from that place, and then it will interact with. अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि we are using surfactant. For example, if we are injecting surfactant into the reservoir, so it has both the qualifications of hydrophilic and hydrophobic nature. So when it is being introduced into the reservoir, it interacts with the rock first, and if the rock is in oil based nature or water based nature, so it depends upon the compatibility of that rock. So when you are introducing the surfactant, it interacts with the rock first, and then it attaches with the oil molecules, and it tends to remove those molecules from those walls, and then it becomes mobile, and your oil recovery improves. So these interactions can be of number of due to a number of mechanisms, like we are reducing the interfacial tension by surfactants. We are uh, soiling the oil which is present in a reservoir, whether it's a thin, very thin oil, so you are swelling it, and then oil viscosity reduction. It's if it's very uh, high viscous crude, so वो अपनी viscosity की वजह से travel नहीं कर पा रहा, so you are going to use different thermal methods or uh, other different fluids in order to reduce the viscosity of that crude. And then you are another mechanism, very important mechanism, is wettability modification. क्योंकि आपके जितने भी रिजर्वायर्स ऑयल वेट होते हैं, आप उनको वाटर वेट करने की कोशिश करते हैं. जितना आपका रॉक वाटर वेट होता है, आपकी ऑयल की रिकवरी उतनी ज़्यादा होती है, और मुख्तलिफ फेस बिहेवियर्स भी प्रेजेंट होते हैं रिजर्वायर में, तो उनको भी अल्टर कर रही होती है ये फ्लूइड. So there are number of mechanisms which are in result improves your oil recovery. So it says the interaction are attributable to physical and chemical mechanisms and to the injection or production of thermal energy. So now there are a number of behaviors. Some are physical behaviors and some are chemical behaviors. So it depends. Now again, it depends upon the rock characteristic and your fluid which is present in the reservoir. So if it's a carbonate rock, so definitely there will be chemical mechanisms involved. And if it's a sandstone rock, then there will be more on the mechanisms will be more on physical side. So again, it says that these mechanisms will be resultant to the injection or production of thermal energy. That a very small example of that is that when you are injecting any polymer into the reservoir, what happens that there is a injectivity pressure. तो वो जो पॉलीमर जब आप वेल में इंजेक्ट कर रहे होते हो, तो उसका एक shear रेट होता है हर पॉइंट पे. मतलब फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग ऑफ द वेल बोर, जैसे ही वेल बोर में आपने फ्लूइड को इंजेक्ट किया, तो when it's entering into the formation, उस जगह पे बहुत ज्यादा शेयर रेट होता है. इट्स इन थाउजेंड्स. सो जब इतना ज्यादा शेयर रेट उस पॉलीमर को मिलता है, एंड योर पॉलीमर इज अ एजेंट ऑफ विस्कोसिटी. सो अगर कोई भी फ्लूइड इतनी ज्यादा शेयर रेट पे इंट्रोड्यूस होती है, तो उसकी विस्कोसिटी डिस्टर्ब हो जाती है. So this basically this attribute depends upon the injection part. Again, in production part, आपने किसी भी ऑयल की क्रूड ऑयल जो हैवी क्रूड ऑयल था, उसको विस्कोसिटी को आपने रिड्यूस किया थ्रू थर्मल एनर्जी. अब जब वो प्रोडक्शन वेल से ट्रेवल कर रहा है, सो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग
it's not necessary that this crude has 100% being converted or being lightened to the low viscosity crude. There must be a portion of the original crude present in there, a portions, a chunks there. So when it's coming into the production well and when you are trying to produce it, तो ये जो heavy crude होता है ये नीचे settle down होता जाता है. So again there are this production problems there. So it depends upon that how you are planning all these things from very beginning till the end. क्योंकि अगर आपने प्रोसेसिंग में कोई भी चीज यूआर प्रोसेसेस में कोई भी चीज अगर आपने मिस कर दी तो आपका पूरा प्रोसेस मतलब फेल हो जाता है. It's not only the fluid or the method which you are selecting, but the proper implementation of that method is also very important. After that, it says that simple water flooding and the injection of dry gas for pressure maintenance of oil displacements are excluded from the definition. Because water flooding is not part of EOR. In some cases, it was considered, but again, simple जो नीचे आपका गैस रिजर्वायर ड्राइव मैकेनिज्म मौजूद है, आप अगर उसको बूस्ट कर रहे हो या उसको मेंटेन कर रहे हो और कोई भी मैकेनिज्म जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं या इसके अलावा भी कोई अगर मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जस्ट प्रीवियस एनर्जी सोर्स को आप मेंटेन कर रहे हो, सो इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर प्रोसेस. सबको आवाज आ रही है? Can you Yes, raise sir. your hands? That's the problem in the class. कि आप खुद से बात करते रहते हो. You're not able to communicate with the students. Anyways, so our next slide is EOR processes. We are continuing it. It says that EOR process often involves the injection of more than one fluid. In a typical case, a relatively small volume of an expensive chemical, primary sludge, is injected to mobilize the oil. This primary sludge is displaced with a larger volume of relatively inexpensive chemical or secondary sludge. So it's clear from the definition that आप जब भी किसी भी EOR प्रोसेस में नॉर्मली ये जो प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन हो रहा है ये केमिकल इंजेक्शन केमिकल EOR मेथड है. तो केमिकल EOR मेथड में नॉर्मली हम या तो पॉलीमर इंजेक्ट करते हैं या फिर सरफेक्टेंट इंजेक्ट करते हैं या थर्ड वन इज अल्कली या मिसलर जिसको हम कहते हैं वो इंजेक्ट करते हैं. अब पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप दोनों साथ में भी इंजेक्ट कर सकते हो. मतलब पहले स्लज आपने पॉलीमर का इंजेक्ट किया उसके बाद फिर आपने सरफेक्टेंट इंजेक्ट किया या फिर तीनों भी कर सकते हैं आप step by step. So it says that it's not necessary that you are only going to use a single fluid for your process, but it can be more than one fluid. तो the purpose of the secondary sludge is to display. अब होता ये है कि ये जो आप पॉलीमर या कोई भी केमिकल आप यूज कर रहे हो योर प्रोसेस में, इट्स वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल. तो अच्छा ये पहले मैं आपको डायग्राम समझा लूँ थोड़ा सा, इसमें से आप आइडिया ले लें that what it is saying. अब ये नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फ्लूइड इंजेक्टेड लिखा आ रहा है और ये ब्रैकेट में इसमें पीवी लिखा हुआ है. ये पीवी बेसिकली पोर वॉल्यूम होता है. सो इफ यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस लेक्चर्स, पोर वॉल्यूम हम उस वॉल्यूम को कहते हैं जो कि आपका रिजर्वायर उतना फ्लूइड होल्ड कर सकता है. फॉर एग्जांपल एक आपका कंप्लीट रिजर्वायर है तो आपकी जितने भी पोर स्पेसेस कनेक्टेड है और जहां से आपकी फ्लूइड या क्रूड या कोई भी लिक्विड मूव कर सकती है और वेलबोर से वो प्रोड्यूसिबल है, तो वो जितना भी वॉल्यूम होता है आप उसको पोर वॉल्यूम कहते हो. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले हम ब्राइन फ्लडिंग करते हैं कि पहले पानी इंट्रोड्यूस करवाया, ये जो सेकेंडरी फ्लड है आपका. सेकेंडरी फ्लड के बाद हमने
तकरीबन 2 पीवी सेकेंडरी फ्लड इंजेक्ट किया, मतलब जितना रिजर्वायर का वॉल्यूम था उसका डबल अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव इंजेक्टेड व्हिच वाज सेकेंडरी फ्लडिंग। और फिर सेकेंडरी फ्लडिंग के बाद हमने आधा पीवी मतलब हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ योर रिजर्वायर के, रिजर्वायर का जितना आपका वॉल्यूम था उसका आधा वॉल्यूम हमने वो केमिकल इंजेक्ट किया। यहाँ पे एचपीएम है, इट्स अ पॉलीमर, बेसिकली दिस इज पॉलीमर फ्लडिंग। तो ये आधा पीवी हमने इंजेक्ट किया, उसके बाद फिर 1.5 पीवी, 1.5 पीवी अगेन योर ब्राइन वाज इंजेक्टेड। तो इस प्रोसेस में हम कर सकते थे कि हाँ 2 पीवी तक हमने सेकेंडरी फ्लडिंग की और फिर 2 पीवी से लेके हम 4.5 पीवी तक अगेन हम पूरा ये पॉलीमर इंजेक्ट करते, बट दैट्स नॉट द केस। हम क्या करते हैं कि हमने आधा पीवी पॉलीमर इंजेक्ट किया और उसको पीछे से सपोर्ट देने के लिए कि आपका जो फ्रंटल पिस्टन लाइक डिस्प्लेसमेंट फ्रंट बनता है वो बना लिया पॉलीमर ने। वंस इट्स बीइंग डेवलप्ड तो पीछे से आप उसको सिर्फ पुश करते आ रहे हो कि वो फ्रंट आपकी ऑयल को रिमूव करता जाए, और पीछे सपोर्टिंग फोर्स जो उसकी होती है वो वही चेज या ब्राइन फ्लड होता है। क्योंकि ये जो चेज या ब्राइन फ्लड है ये आपके इस पॉलीमर से ज्यादा विस्कस नहीं होता, तो इसीलिए ये इसको बाईपास नहीं कर पाता। ये फ्रंट पहले बना होता है और फिर पीछे से ये सपोर्ट कर रहा होता है। So it says the purpose of secondary sludge is to displace the primary sludge efficiently। अब ये सेकेंडरी स्लज है और ये वाला प्राइमरी स्लज है। यहाँ पे जैसे ही आपने पहले आधा पीवी इंजेक्ट किया तो उसके बाद आप ये तकरीबन 2 पीवी उसके पीछे सपोर्ट में इंजेक्ट कर रहे हो और वो उसको पुश कर रहा है, जो कि आपका सेकेंडरी स्लज होता है। With as little deterioration as possible of the primary sludge. In some cases, additional fluids of even lower unit cost are injected after a secondary sludge to reduce expenses. In such a case of multiple fluid injections, अब ये सिर्फ एक सिनेरियो मैंने आपको बताया है, या देयर कैन बी नंबर ऑफ सिनेरियोज इन योर प्रोसेसेस कि ये तो हमने सिर्फ एक केमिकल यहाँ पे यूज किया हुआ है। अगर हम 2 केमिकल यूज करते हैं या 3 केमिकल यूज करते हैं तो फिर ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि पहले आप आधा पीवी उस केमिकल का यूज करते हो, फिर सेकेंडरी स्लज पे आधा पीवी दूसरे केमिकल का यूज करते हो, फिर टर्शरी लेवल पे जो थर्ड केमिकल होता है उसका आधा पीवी यूज करते हो। क्योंकि हम यहाँ पे ये पीवी स्पोर वॉल्यूम से आप ये समझें कि रिजर्वायर का वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है रिजर्वायर का, और आप इतना ज्यादा अगर केमिकल उसमें इंजेक्ट करते हो, महीनों तक आप ये केमिकल उस वेल में इंजेक्ट कर रहे हो, सो इट्स वेरी दैट केमिकल इज वेरी एक्सपेंसिव एंड it's not feasible or cost effective to go for that until and unless you are sure that आपकी जो रिकवरी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, then you are going to take that risk and you will go for maybe 1 PV or 1.5 PV or even 2 PVs, but normally we go for half PV of the reservoir volume, and then secondary sludge है या टर्शरी स्लज है उसके बाद हम फिर उसमें चेस वाटर पीछे हम इंजेक्ट करते हैं। Even though the final chemical sludge might be water or dry gas that is injected solely to displace volumetrically the fluid injected earlier in the process। ये जो हमने केमिकल पहले इंजेक्ट किया था उसकी सपोर्ट के लिए ये चेस ब्राइन पीछे हम 2 पीवी इंजेक्ट करते हैं ताकि वो उसको क्लीन आउट करता जाए और पॉलीमर को पुश भी करे, उसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स भी अवेलेबल हो। So any questions up till now? No. If you have any questions, you can write those questions in chat box. कोई क्वेश्चन नहीं है? नो। चलें बेटा, नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि या तो आप सब इतने ज्यादा होशियार हो कि आपको सब कुछ आता है, या फिर
कुछ भी समझ नहीं आता कि ऊपर से जाता है, एंड आई डोंट लाइक द सेकंड पार्ट ना. If you are not understanding, if my way of communication is not understandable, so please question that as well, कि मैं अपना मेथड चेंज कर लूं या किसी दूसरे तरीके से पढ़ाऊं या और आसान करके पढ़ाऊं या और कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाऊं, आपको बहुत ज्यादा आसान लग रहा है, सो जस्ट लेट मी नो ना. So this is the subtopic of your process. It's, it's target oil resource for your processes. तो जहाँ पे हम एक छोटी सी आपको मैं केस स्टडी बताता हूँ कि several studies have estimated the potential oil recovery through the application of your processes. एक केस स्टडी हम की गई थी जिसका ऑब्जेक्टिव था कि the part of the objective of this study was to estimating the target oil resource for EOR. के EOR का अमाउंट कितना है जो मतलब उस किसी पर्टिकुलर जिस केस स्टडी का हमने किया था या उसको फिर हमने एक्सट्रापोलेट किया था पूरी दुनिया के लिए. सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये एक कंट्री है जिसकी ये ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस अमाउंट है आपका क्रूड का, which is 536 billion. So it says that figure shows the total oil resources in the ABC country as of the end of 2022. So approximately 536 barrels of oil had been discovered. अब ये ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस है जो कि प्रोड्यूसेबल है. अच्छा, इसमें 162 प्रोड्यूस्ड है, 23 रिजर्व्स हैं और EOR प्रोसेस का जो टारगेट है वो 351 है. So if you go into the text, the cumulative production through 2022 was approximately 162. 2022 की एंड तक हमने इस 536 में से 162 प्रोड्यूस किया है. एंड द प्रूवन रिजर्व्स अमाउंटेड टू 23 बिलियन बैरल्स. अब प्रूवन रिजर्व्स क्या होती हैं कि ऐसे रिजर्व्स जो अभी प्रोड्यूस नहीं हुए बट दे with the given current technology we are able to produce it. So जो रिजर्व्स हैं वो 23 बिलियन है, प्रोड्यूस हमने 162 कर लिए हैं, ओवरऑल 536 है. So still we have, thus the proven reserves at the end of 22 included primary and water flooding. Still we have around 351 barrels of billion barrels of oil remaining to be produced by EOR method. So इस फिगर को दिखाने का मकसद ये है कि as I told you earlier that in primary method हम normally 20 to 30% of जो आपका हाइड्रोकार्बन मौजूद है नीचे वो हम प्रोड्यूस करते हैं. Still 60 to 70% of your oil or your hydrocarbons are present in the reservoir. So again with the water flooding it's just 5 or 10% more recovery, or in some cases it's up to 20% as well. But wait a second, one of a student is not able to join and he is texting me again and again. Let me invite him into the session. What's his name? Ibadullah hai? Ibadullah is there? No? इबादुल्लाह है सर. What's his roll number? 17. सर हाँ बेटा, आपने मैसेज किया था, ज्वाइन नहीं हो रहा. आ गए? चलें ठीक है. जी सर, अब ज्वाइन हो गए सर. चलें, वेलकम.
So we were discussing about the case, and this case study. Still, we have more than 50% of original oil in place, crude oil, which we need to produce through EOR processes. If this 1/3 recovery fraction for primary and plus secondary production holds worldwide, then your target approaches to 2 trillion barrels for the world, not including countries that formerly had centrally planned economies. So ये एक general rough figure है, and it's not exactly that this much amount is targeted for your processes, but it's just a rough figure that 2 trillion barrels क्रूड ऑयल जो दुनिया में मौजूद है वो हम EOR processes से प्रोड्यूस करवा सकते हैं. But again, this EOR process, it's very complex in nature itself, that आप उसको you're not sure about whether you will get recovery or not. इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि नीचे आपके रिजर्वायर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं on the side of your structure, on your fluid type and your reservoir characteristics. So there are a number of parameters which are involved in this process, क्योंकि आप बाहर से एक दूसरी fluid introduce करवा रहे हो. अब reservoir का behavior जो है, you are not able to 100% be sure about that this will be the behavior of the reservoir ना. तो वो किसी भी टाइम पे किसी भी पॉइंट पे जाके आपकी फ्लूइड के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फेलियर फ्लूइड वो बाईपास कर जाती है या लॉस्ट हो जाती है नीचे. सो वी विल डिस्कस ऑल दोज reasons for that, but for now, in order to show you the importance of EOR, that these methods are very important in order to produce your hydrocarbons. और ये वाटर फ्लडिंग से भी समटाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ वाटर flooding has produced around 5% or 10%, so the EOR methods can go up to 15 or 20% additional oil recovery. कि आपका ओरिजिनल ऑयल जो प्लेस था उसका अराउंड 15 to 20% is a very huge amount, and through your processes you can achieve that. तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो EOR methods implement हो रहे हैं वो चाइना में हो रहे हैं. They are far ahead from the rest of the world. So it says the physical chemical characteristics of the target oil are varied and range from high API gravity volatile crudes of low viscosity to low API gravity heavy crudes of very high viscosity. So again, as I told you that the type of fluid which is present in reservoir which you are producing, आप your process उस बेसिस पे सिलेक्ट करते हो कि क्रूड ऑयल की एपीआई ग्रेविटी कितनी है, कौन से टाइप का क्रूड है, इज इट लाइट क्रूड ऑयल और हैवी क्रूड ऑयल. तो योर प्रोसेस उस बेस पे आप फाइनल करते हो, नॉट जस्ट ऑन द टाइप ऑफ दिस fluid which is present in the reservoir which is hydrocarbon, but the type of rock as well, the structure of your reservoir के low dip है, up dip है, और कितनी डिस्टेंस का आपने उसमें रखा हुआ है कि आप जिस इंजेक्शन वेल से आप उसको इंजेक्ट करते हो तो उसके ट्रैवलिंग टाइम कितना है, वो किस पैटर्न पे ट्रैवल कर रहा है, माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर उसका क्या है, मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर क्या है. सो देयर आर नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी कंसीडर्ड इन ऑर्डर टू go for any EOR process. So it says significant amount of oil exists across this physical chemical spectrum, and therefore your technology cannot focus on particular oil type without eliminating a large fraction of target resource. It's again the same thing कि बहुत ज़्यादा amount present and we need to be very focused not just on the type of fluid which is present, but
other parameters as well, no? So in your processes, it says that clearly no single EOR process will be applicable to all crudes, and a number of different processes will have to be developed. A parallel difficulty is that oil resources exist in reservoirs of widely varying characteristics. Oil reservoir types range from very thick carbonate reef formations at significant depths to relatively shallow, thin sandstone bodies. The reservoir rock type and the structure influence most your processes and are important variables. But please wait for 1 minute. I will be back. Yes, Beta. So we were discussing about that there is not any single EOR process which can be applied to all the reservoirs that we are just we are just screening that we will implement this EOR method in sandstone and that method in carbonate. That's not the case. So in order to select any EOR process, it's very important to consider all the parameters like what is the rock type, what is the rock structure, what is the fluid type, what are the fluid characteristics, how many fluids are present there, what are the driving forces. So there are a number of parameters to be considered कि कौन सा रिजर्वायर है, कार्बोनेट है तो उसकी थिकनेस कितनी है रिजर्वायर की, is it a thin bed or is it a pocket reservoir or is it a big reservoir. So again कि injectivity distance कितना है उसका. So there are a number of parameters to be considered before finalizing any EOR process. So it says Wellhite in 1986 describes the role of geology and its significance for displacement processes. Finally, the saturation, distribution, and physical state of oil in a reservoir as a result of past production operations are important factors in the implementation of EOR process. Again, saying the same thing that कि आपकी रिजर्वायर की जियोलॉजी कैसी है, जियोलॉजी इन सेंस कि रिजर्वायर का स्ट्रक्चर कैसा है, because there are number of parameters to be considered before finalizing any EOR process. कि पहले आपका रिजर्वायर before before production आपका जो रिजर्वायर था उसका जो ड्राइव मैकेनिज्म्स था या उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स फील्ड हैं they are in a different state, but once they are introduced to the wellbore और जब वो ट्रैवल करते हैं आपके वेलबोर में तो पीछे जो आपकी हाइड्रोकार्बन स्पेसेस वो स्पेसेस रिप्लेस हो रही होती हैं. So with every passage of time the behavior of that crude and the structure means the pore structure of your rock it's being altered at every stage. तो जितनी भी प्रोडक्शन हिस्ट्री होती है that's very important in order to be to analyze that production history. वहां से आपको आपके रिजर्वायर का बिहेवियर पता लगता है कि how its fluid is behaving when it's being moved into the reservoir pores. So again the
number of parameters are to be considered before selecting an EOR process. Typically, a reservoir will undergo primary production followed by water flooding. A recovery by those processes in individual reservoirs might have approached 35 to 50%. This is a very big number. When the water flood reached an economic limit, normally 30% or 40% max tak jata hai, but in some cases, in very few cases, it went to 50% with primary recovery and water flooding कि जो उसका अपना natural drive force था उससे around 20 to 30% production है. After that, max 50%. अब 50% your hydrocarbons are still remaining into the reservoir, and EOR comes in that at that stage in order to produce as much possible as we can. And possible means that you need to consider that the method which you are using, it's economical, and the technology which you are using, it's the most available or the latest technology. And क्योंकि आज से 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी, तो उन केसेस में कुछ रिजर्वायर्स ऐसे थे जो प्रोड्यूसिबल नहीं थे, बट नाउ यू आर एबल टू प्रोड्यूस देम. सो in order to implement the current latest technology, इसका छोटा एग्जांपल ये है कि आज से 10-15 साल पहले नैनो पार्टिकल्स यूज नहीं हो रहे थे ईआर इंडस्ट्री में, बट नाउ इवन दो फील्ड में अभी तक नैनो पार्टिकल्स यूज नहीं हुए, बट दिस रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड इट्स वेरी गिविंग वेरी prospective पॉजिटिव रिजल्ट्स. तो ये जितने भी न्यू मेथड्स हैं या जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, दे कैन improve your process up to maybe 30 or 40%, who knows. So the residual oil in the part of the reservoir swept by the water flood remains largely as isolated trapped droplets or ganglia. We call it ganglia in the pores or films around the rock particles, depending on the rock wettability. So after the water flooding, again, क्या आपका जो remaining oil है, अब वो जो remaining oil मौजूद है रिजर्वायर में, whether it's attached to the surface of rock pores or it's being stuck into the pore spaces, and it's not mobile. तो ये क्योंकि नेचुरल ड्राइव से आपने प्रोड्यूस कर लिया, पानी से प्रोड्यूस कर लिया, अब जब पानी बाईपास हो गया और उसने कुछ एरिया को टच किया, कुछ एरियाज स्वेप्ट नहीं हुए, so those areas need to be swept as well. तो your process वहाँ पे अपना रोल प्ले करता है, and you are going to produce that remaining oil through your process. So an EOR process must be able to mobilize the droplets or oil blobs and to create an oil bank that can be efficiently propagated to producing wells. अब होता ये है कि वाटर फ्लडिंग में नॉर्मली जब हम इंजेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें पानी हमेशा बाईपास करने की कोशिश करता है ऑयल को, एंड वाटर अप्रोचेस टू योर प्रोडक्शन वेल्स ना. तो वहाँ पे जो एक तो आपका फ्रंट बनता है आपके केमिकल का ईआर में जब आप उसको इंजेक्ट कर रहे होते हो, दूसरा जो ऑयल डिस्प्लेस हो रहा है वो भी एक अपना फ्रंट बनाता है, क्योंकि वो भी पुश हो रहा है पीछे से ना. जो आपका केमिकल फ्लड था, जो फॉर एग्जांपल पॉलीमर आपने इंजेक्ट किया था, पॉलीमर का जो फ्रंट बना हुआ है वो ऑयल को निकाल रहा है अपने पोर स्पेसेस से. तो दीज पोर स्पेसेस से जैसे ही वो निकल रहे हैं तो ऑयल का भी बैंक बन रहा है पूरा ना, तो वो बैंक पुश करता आ रहा है अगले ऑयल को. तो सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब पॉलीमर का फ्रंट बना रहे हैं तो देयर मस्ट बी द ऑयल बैंक अहेड ऑफ दैट which will be finally introduced at the
producing well. अगर वो चीज नहीं हो रही, it means there is some problem there at some point. So you need to understand that. So in other circumstances, an EOR process might be applied after primary production. Again, जो हमने chronological discussion किया था, it's giving the same statement that it's not necessary कि हमेशा EOR third type process पे ही आए, आप उसको second या first process पे भी ले जा सकते हो. The oil may exist at a relatively high saturation, perhaps approximately 50 to 60%, and may still exist in a connected state. The relative permeability to oil significantly greater than zero. A gas saturation might also be present depending on the primary recovery mechanism. So again, it's giving the same idea that it's not necessary कि आप your process को third पे ले जाओ. अगर water flood की जरूरत है तो आप water flooding करो. If not, अगर gas drive है तो आप गैस इंजेक्ट कर सकते हो गैस कैप में, या जो 50 to 60% आपका ऑयल कनेक्टेड है रिजर्वायर में, आप डायरेक्ट ईओआर मेथड इंप्लीमेंट करके उसको प्रोड्यूस करवा सकते हो. So in this case, the EOR process would be expected to build an oil bank, which in the manner of water flood. The displacement efficiency, however, must be better than for water flood, in that only small amounts of trapped oil should be left behind. So again, it's saying the same thing कि आप जब अपना केमिकल इंजेक्ट करोगे तो इट शुड हैव अ बेटर डिस्प्लेसमेंट फ्रंट देन वाटर फ्लडिंग, क्योंकि वाटर हमेशा फिंगर टाइप फ्लो कर रहा होता है और वो बाईपास करने की कोशिश करता है. योर केमिकल शुड हैव अ फ्रंटल डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, ताकि वो प्रॉपरली जो अनटच्ड जोन्स थे जहां पे पानी नहीं पहुंच सका, योर केमिकल शुड रीच देयर एंड it should remove those oil droplets from those rock pores, and the sweep efficiency should be improved compared to water flooding. अगर ऐसा नहीं होता then your process का कोई करने का कोई फायदा नहीं है. आपने वाटर फ्लडिंग से जो अचीव किया था वो कर लिया था. So your processes का मकसद ये होता है कि आप जितना आपने वाटर फ्लडिंग से अचीव किया है, you should achieve more than that. उसके लिए जो केमिकल फ्लड है उसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रंट बनता है, दैट शुड बी देयर. कि अगर वो फ्रंट नहीं बनता और आपका जो केमिकल है वो एक साइड पे फ्लो कर जाता है, या अप साइड पे होता है या डिप साइड पे चला जाता है, और वो वहां से फ्लो करके वेलबोर में आ जाता है, प्रोडक्शन वेलबोर में आ जाता है, so you're going to bear a very huge loss in that. So the experts, the engineers should be very cautious about that. और उसके लिए जितने भी रिजर्वायर की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं या रिजर्वायर की जो पास्ट हिस्ट्री है, बिहेवियरल हिस्ट्री जो है उसकी फ्लूइड की, दे स्टडी दैट फर्स्ट एंड देन दे गो फॉर द फाइनल EOR process. Last but not the least, the economic attractiveness of an EOR process applied as a secondary operation normally is compared with the alternative of water flooding. Okay, that is recovery and cost greater than the expected from a standard water flood. Again, your process is very expensive, and you think 100 times before even going for this option that whether we should go for that or not, because आपने water flooding की है and you are damn sure about that your process आपकी water flooding से ज्यादा amount produce करवाएगा, तो आप your process पे जाते हो. Otherwise you just omit that. Like our country cannot afford your method, any your method. It's very expensive. Similarly, these methods are being implemented in developed countries, and unfortunately, still after your processes, a major chunk of oil or hydrocarbons is still present into the reservoir, and we just abandon those reservoirs because we do not have current technology at the time. Maybe after 10 years or 20 years, अभी जो हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे किसी भी और मेथड से, maybe it's possible that हम
उसको प्रोड्यूस कर पाए इन कमिंग डेकेड्स, हु नोस। सो क्योंकि बहुत सारे रिजर्वायर्स ऐसे हैं जो 50% एक्सप्लोर हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, या 60% प्रोड्यूस हुए हैं, स्टिल 40% इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर एनी रिजर्वायर, और वो नीचे अभी भी मौजूद है। सो वी डू नॉट हैव एनी करंट टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस, लाइक हम जैसे हमने पढ़ा है कि शेल गैस हम प्रोड्यूस करवा रहे थे, we are producing it in these last few years or last 5 or 10 years. उससे पहले it was not possible that we could produce it, और या टाइड गैस या शेल या जितनी भी ये आपकी अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, उसको आप पहले प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ यू हैव द टेक्नोलॉजी टू डू दैट। सिमिलरली फॉर योर प्रोसेस, हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टिल देयर इज अ वेरी बिग मार्जिन दैट वी कैन इम्प्रूव इन दैट स्पेस एज वेल। बट प्रॉब्लम ये होता है कि हमने उसके लिए फिर अलग से बहुत सारी स्टडीज करनी पड़ती हैं कि आपने किसी भी वेलबोर में किसी भी रिजर्वायर में आपने ईओआर मेथड अप्लाई किया हुआ है, सो इट हैज ऑलरेडी कंटामिनेटेड दैट रिजर्वायर। अब उसी कंटामिनेटेड रिजर्वायर से दोबारा प्रोड्यूस करवाना, अगेन इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, and it's a very difficult task to do that as well. But where there is a hope, where there is a will, there is a hope, there is a way. So अब हम इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 5 or 10 minutes, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। सो योर अटेंडेंस विल बी ऑफ दिस क्लास। अभी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको लेक्चर 3 ज्वाइन करना पड़ेगा। सो यू नीड टू लीव दिस सेशन and you need to join back in like lecture number 3 ना, ठीक है बेटा? तो till then ओके सर। 5-10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर 9:35 पे आप क्लास 3 को ज्वाइन कर लेक्चर 3 में आके ज्वाइन कर लें। थैंक यू।